Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, Ancient Civilization. And this is your book page, chapter number 1. Quickly pause the video and open the book. I hope everybody has opened the book. So my dear students, let's quickly move forward towards today's student learning outcome. आज के लेसन में तमाम स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे that they will be able to explore the importance of primary and secondary sources in knowing about the past. So दो चीज़ें बहुत important है कि जब हम history की बात करेंगे या past की बात करेंगे तो आपको primary और secondary जो sources हैं, primary and secondary sources, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका क्या ताल्लुक है और ये दोनों sources क्या हैं और ये किस तरीके से हमें past को या history को explore करने में further help करते हैं. So my dear students, sources of history, there are two types of sources of history as you all know. History use sources of history to write and study about ancient civilizations or empires. So my dear students, पुराने अदवार जो हैं जब उनके बारे में हम बात करते हैं या further हम उनको describe करते हैं तो हम दो तरह के जो sources हैं उनसे data extract करते हैं. One is the primary source and second is the other is the secondary source. So definitely primary and secondary sources are the sources or the types of the sources from which we record the history. So discussing about the primary source of history, क्या होता है ये? So original होता है ये और uninterrupted materials होते हैं. यानी कि as it is, archaeologists जो हैं जब digging के दौरान कोई artifacts या चीज़ें dig करते हैं, निकालते हैं, कोई original writings होती हैं, वो क्या कहते हैं? उनको primary sources कहते हैं और फिर फर्दर जो है उनको स्टडी किया जाता है. तो पास्ट में प्राइमरी सोर्सेज का बहुत बड़ा, जब हम उनकी स्टडी करते हैं हिस्ट्री की तो बहुत अहमियत है प्राइमरी सोर्सेज की. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकेंडरी सोर्सेज. तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं? ये तमाम वो सोर्सेज हैं जिनको फर्दर आगे इनको रिकॉर्ड किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेज से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लेट्स से एक आर्टिफैक्ट निकला है और उससे जो है फिर मुख्तलिफ एनालिसिस उसके ऊपर किया जाए और हिस्टोरियंस जो हैं उसको फिर उसके आगे जो है कोई एसेज या उसके ऊपर कोई कॉलम्स वगैरह लिखे या उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो करें. तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स. यानी कि प्राइमरी सोर्स सबसे पहले होता है और फिर उसके बाद जब उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है तो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सोर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू नो अबाउट द टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. पास्ट किस तरीके से टाइप्स होती हैं सोर्सेज की. सो नाउ पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. So for your homework, you will complete the skill sheet, skill 1.1. It is given in your books and the QR code is attached. You will scan the QR code and you will complete the skill sheet. So my dear students, further in your homework, you will complete MCQ number 2 and 3. And this is it. बहुत आसान था आज का lesson, बहुत easy था. Do read it out. If you do miss anything, re-watch the lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.